In this video, I am giving information on anemia, and this disease, a problem, is related to the blood and cardiovascular system. In the last video, I gave information on the high blood pressure or hypertension related to the disease of blood and cardiovascular system. The cardiovascular system means heart and arteries and capillaries. All are have a great role in the transport of blood. The heart pump and then circulate blood through the arteries and different parts of the bodies. And details I already posted a video, but this video I am giving information on the anemia. Anemia is known as a pandu in Ayurveda, and anemia is a condition marked by the deficiency of the healthy RBC or a hemoglobin. Hemoglobins, you must know, the hemoglobins is a iron-rich protein, and RBC means red blood cells. The blood is composed of the RBC, WBC, and platelets, and hemoglobin is found in the RBC that transport oxygen throughout the body. And the low hemoglobin levels may be the symptoms of the this disease, but sometimes maybe several symptoms behind this. I already talk about the poor diet and pregnancies and heavy periods in women during menstruation cycle, and poor absorption of iron absorption are the causes. But hemoglobin level is in the male patient is 16 to 18 gram per deciliter, and in the female 12 to 14 gram per deciliter is reported. And this hemoglobin deficiency in Ayurveda is mainly cause of the pitta dosa. In Ayurveda, there are three dosas: Vata, Pitta, and Kapha. And this problem, anemia, is caused by the recession of the पिता, यानी कि पित्त के कुपित हो जाने पे ये प्रॉब्लम होती है. While the constipation, the pit is mainly related to the enzymes and hormones, harmonic maintenance. Enzymes, in our saliva, ethylene is present, which support in the digestion. And in the pitta recession patient are generally constipated, and generally for the main symptoms is the of the first I will talk about the symptoms of the anemia that prevents the body from making enough hemoglobin is the fatigue and poor diet and tiredness due to the poor diet, and dizziness, headache, and constant tiredness, and pale skin. Means the surface of the hand, you see in the video which I posted, the surface of the pale skin and hair fall and brittle nails are the main symptoms of this anemia. And how to treat this problem? If the pandu roga is caused by the malfunctions of any organs, like the pitta is mainly controlled by the affect liver problem, gallbladder, and stomach.
because enzymes are related to the digestion and uh, other uh, intestine related problem, which make constipation like problem. If properly not digested food, then constipation cause. And so other beside these pitta variation, other are the bone marrow and heavy periods in women are are can be treated by the physician, Ayurvedic physicians. And regarding to this treatment of this anemia, Punarnava Mandura, which contains about 22 ingredients, means constituents of this drug. The most important in this formula is the Mandura, is a product of the iron ore, rich in the assimilation of forms of the iron, assimilative forms of the iron. And second is the Punarnava. You know, Punarnava is the herbal plant, herbaceous plant, or generally found to occur in the hot and dry regions. एंड पुनर्वा का मतलब हिंदी में भी मैं अभी बताऊंगा कि सबसे पुनर्जीवित करना पूरा शरीर को। तो इसमें ये प्लांट्स में गुण होते हैं कि ये एक तो कंस्टिपेशन को सॉल्व करता है और उसका पूरा बॉडी को रिजुवनेटिंग करने की पावर होती है। तो इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट ये है, एक तो फर्स्ट मैंने बताया मंडूरा, जो कि आयरन का और का से मेनली रिलेटेड है, ये प्रोडक्ट ऑफ आयरन। ये जानते हो आपके वुमेंस जनरली ये आयरन की टैबलेट्स भी खाते हैं कि एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा इसी तरह से इसमें भी ये मंडूरा में जो है आयरन का और होता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो एनीमिया की। दूसरा है इसका मंजूर पुनर्नवा, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट इस फार्मूला में है प्लांट रिलेटेड। और ये पुनर्नवा का प्लांट खासकर गर्म जलवायु के स्थानों में मिलता है, मीन्स इन फाउंड इन द हॉट रीजन्स। एंड this the whole plants are in panchang form, generally this plant drug is taken. And normally 1 gram of this drug is given 4 times in a day, and this should be well mixed with honey, especially for the children's, and but adults can take without any mixing. And the dose may be proportionately reduced, especially in case of the for children's. But in adults, in 1 gram of this drug is given 4 times. And choose foods containing the vitamin C to enhance the iron absorption. तो vitamins रिच जैसे आंवला आप ले सकते हैं, रेडिस ले सकते हैं जिसमें विटामिन सी मिलता है। तो इस तरह का फूड आपको लेना है, यानी वेजिटेबल्स लेने हैं। दूसरा इसमें जो मेन अदर रेजिमेंट्स इसके हैं, एक तो डाइट में स्पेशली आप अवॉइड करें कर्ड और खट्टे मतलब साउर थिंग्स, especially curd and fried things should be prohibited. And you can take green vegetables which are useful to this problem. And Punarnava, this medicine, this drug is helpful in the digestion or all the other related to this controlling of the liver problem solving or gallbladder or intestine. This plant is very useful herbal plant. And but which drug I already talked about, the Punarnava Mandura. This plant is do not work in the constipated patient, means जिनको ज़्यादा constipation problem उसमें नहीं कर, तो वो उन पेशेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, त्रिफला लेना चाहिए, सुबह खाली पेट वाला वो ले या रात को ले सकते हैं, तो कंस्टिपेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उनकी। और ये वैसे तो ये पुनर्नवा इसमें लेग्जिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो अदर ड्रग है पुनर्नवा मंदूरा बताया इसमें भी लेग्जिटिव है, मिल्ड लेकिन मिल्ड है। जो जिनको बहुत ज़्यादा कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो त्रिफला ले सकते हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है इनका इसी से काम हो जाएगा पुनर्नवा
यानी पुनर्वा मंदुरा से लेने से हो जाएगा। तो ये इसके लिए मेनली डोज है। और वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये प्लांट्स मैंने दिया है इसके ट्रीटमेंट के लिए। और उसके अलावा जो आप पित्त को कैसे मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जैसे आजकल मॉडर्न डेज में लोग च्यू करते हैं टोबैको इज द मेजर प्रॉब्लम। तो उससे क्या होता है, मुंह का टाइलिन खत्म हो जाता है, तो फिर आदमी का जो है पाचन कहाँ से होगा सही। तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है कॉन्स्टिपेशन की। और दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द पित्त, पित्त जो आपका पीलिया भी, इससे जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट ऑन द पीलिया, but this time I talk about anemia. And you see through slides what are the main causes and how to control through Ayurvedic drugs. And detoxification, purgative purgation is considered to be the best therapy these days, means for correcting the pitta। and detox किया जाता है बॉडी, ये मैंने क्लेंसिंग थ्रू द प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं कि जो जैसे पुनर्नवा है, ये लेक्सिटिव है, तो इसका डोज लेते हैं तो इससे, लेकिन मिल्ड वाले के लिए। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ा ये त्रिफला वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो ये परगेशन वगैरह भी एक तरह की थेरेपी है जिससे कि बॉडी को क्लेंस किया जा सकता है। धन्यवाद जी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।